So I think recording has started and okay. So I am sharing my screen first. Okay. So tell me, I have given you this question. So you have attempted this question or not? क्लियरली बोल दो सर, किया है तो किया है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, एनीवेज अगली बार करना। किया है या नहीं? अभी अटेम्प्ट कर लेते, नहीं तो Sorry, sir, I forgot. okay, it's okay, no problem. Okay, so we can attempt this problem just now. Okay, then we will go for the further thing because आपको रिवाइज भी हो जाएगा लास्ट कंसेप्ट हमने क्या क्या किया था, एंड देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट थिंग. Okay, so first you just tell me, just calculate, because I have already told you when you take this class, just put copy and paper with you. Don't take like means the camera on and कुछ भी सुन रहे हो whatever. So copy paper pen साथ में रखो. Then you just tell me how many elements are there in this thing. Means total elements. Total elements we will count first. Then we will go for the other things. So how many elements are there? मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? Just sir last minus first plus 1. That's why we will get the total elements. So how many elements are there? You can count, sir. Sir, 21. Last 21. Last value is 10 minus 10 plus 1. Okay, that is 21. According to that, how many elements are there? Here 21 elements are there. And how many elements are there? यहाँ भी कैलकुलेट कर सकते हो, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ. 11. So 11 elements are there. So you can calculate. You can put the value 5 minus 5 plus 1. That is the 11. 11 elements are there. Now I am asking you, sir, just tell me 2. What is the address of this? What is the address of this? Okay. So first मैंने क्या समझाया था आपको लास्ट क्लास में? You can go for this thing. This is A2. First we will go for the row. How many row behind the A2? कितना रो है? Just tell me how many row behind the A2 after seeing this part. यही तो समझाया था. Is that okay? Yes, sir. हाँ, so tell me how many rows are there behind this? Sir, 2. 2, only 2. Just see this part, na. Just check this part, then you can answer. Because array is given to you a minus 10 to 10 and minus 5 to 5. And I am asking you how many rows are present. Means आपकी मैट्रिक्स कैसे बन रही होगी. Now you can understand. रो के लिए किस तरीके से स्टार्ट हुआ होगा? सर -10 -9 -8 like 0 here, 1 2 3 4 and 10 will be here. और कॉलम के लिए कैसा हो रहा होगा? कॉलम के लिए दैट इज द -5 to 5 है. देन दिस इज -5 -4 -3 -2 -1 0 एंड 1 2 3 4 5. सो आई एम आस्किंग यू कि इस 2 से पहले हाउ मेनी रोज आर प्रेजेंट हियर? हाउ मेनी रोज आर देयर? सो यू कैन कैलकुलेट लाइक दिस. सर -10 से स्टार्ट हो रहा था और 2 से पहले मीन्स 1 तक जाएगा. सो द फर्स्ट एलिमेंट इज -10 एंड लास्ट एलिमेंट इज 1. सो आई कैन डू सर लास्ट -1 plus 1. That is the total rows. Okay. So your value will be -10 plus 11 and 12. 12 rows are there. Okay. 12 rows are there. Is it okay, beta? Is it okay? Yes, sir. Okay. So you can say, sir, here 12 rows are there. So every row has how many elements? How many elements are there in this row? You can say, sir, next value. So 11 element present in every row. So you will multiply this 12 into 11. Okay. This is the total number of elements in before the A2. Is it okay? Yes. This thing is okay. We get 139. Whatever. That will be 139. Very good. Okay. So after that we will go for this thing. Sir, now I will check in 2, in the row 2, before the 2 element 2, how many elements are there? So we will check this part. So how many elements present before the 2 in this 2 column, 2 row? So just tell me how many rows, how many elements are there? Calculate. So again you will go, sir, I will go minus here, second part is for
minus 5 to 2, I have to go 2. So the total elements minus 5 to 1. This is my first element and this is my last element. So before 2 there will be minus 5 to 1. So I can calculate the elements, total elements in the row 2. So row 2, so the last element is 1, the first element is 5 and I will plus 1. So this is 5 plus 7. Total 7 elements are there. So I can say sir 7 elements, 7 elements are there before the A22. So you can see here also in the matrix, this element I just need to find out. Here some A22. A22 element will be here. So before that 1, 2, 3, 4, this one 12 rows will be over. So all elements already filled in the memory. These all elements filled in the memory. After that 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 element here it will be filled. Then you will find this element. Okay. So total element already filled in memory in the 1D. You can add these two things. That is what 139 plus 7. I think that is 147. Oh, 146 elements. Okay. Is this? I am right or wrong? I am right now? Is it Yes, okay, sir. beta? Okay. So how many sizes there? Size is given to you 2 bytes, so you can multiply 146 into 2. So what value will get? I think 192. Is it okay? 292, sorry. 4 6. Is it okay or not? 292. So the total address will be 192. Whoa, 292 plus 1000. So that answer will be 292. 1292. That will be your, you will add this value 292 to the base address and you will get the address of this thing 1292. Is it okay? So that thing is okay to you कि हमने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया? That is okay to you? Yes, sir. Everyone, please reply. Then I will go for the next concept because it is related, or you can say that is the resemblance of this question will be there. जब मैं 3D पढ़ाऊंगा तो फिर मैं आपको पूरी मैट्रिक्स बना के नहीं दिखा रहा हूँ. Just I will recap this thing. Okay. So it will be analogous to every 2-dimensional, 3-dimensional, 4-dimensional. What will we teach? We will go for this way only. So this is okay with you? मतलब this is आप लोगों ने ये समझ लिया है? समझ आया ये वाला कंसेप्ट? Yes, sir. Very good. Now I will start the 3-dimensional. Okay. Most of the time इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट व्हेन द सिचुएशन इज 3-dimensional array, so वो किस तरीके की सिचुएशन होगी? I just want to Sir? teach. Yeah, ask me. So what answer did you get, sir, again? Whatever, I am not getting you. Please फिर से बोलो बेटा. Sir, what answer you got in the last question? Address of this A22. Sir, I This is got your voice is not clear in here. So कोई और स्टूडेंट बता sir, सकता I है? said like 139 as in like total, sir. When we add 7 to it. Sir, it was supposed to be 132. Then after you add 7, it becomes 139. And then you multiply it with 2 and then add it with 2000 to get 1278. That was the answer. That should be the answer. So maybe the answer is wrong. Means that is the calculation mistake if there is. So this is 139. Is it okay? Or 132? It should be 132. Yes, sir. I think. 132. Okay, so I written 129. Okay, so you can check this part. So this is 139. Then it will change. Okay, 139. You will multiply 139. So you will get some other answer. So that is the Sir, calculation. Okay? 1278, sir. 1270. So you just give the answer. 1270. 78. 78. Eight. So this is your answer. This is your right answer. So that is the calculation. But the fundamental thing you know, okay? So I just written here 139. That's why that calculation mistake is there. Okay, no problem with that. Okay. So again, I am going for the 3D array. So how can we represent this part? This part we can represent like if I am putting some name, the array name is here. So 2-dimensional you can represent like this. This is 2, sir, this is 3, and you can say, sir, this is 4. So this is 2 and this is 3. We represent the two dimensional array like this. But
For the 3-dimensional, we can put one more dimension. So you can say, sir, we can put one more dimension like this. So 2, 3, 4. So what is the means of that, sir? We can say, as the 2-dimensional, we say in the 2-dimensional, we say, sir, this is the situation for 2-dimensional. So we can say, sir, here we can put the 3 indexes or 3 elements, 0, 1, 2. Here we can put the 4 elements, 0, 1, 2, 3, or the indexes 0, 1, 2, 3. So 4 elements are here, 3 elements are here. So you can say, sir, here there will be 2 elements, here will be 3 elements, here will be 4 elements. Okay, so I can write the indexes also. Sir, because I am starting the indexes from 0, so you can write this thing. So all the indexes I put here. So what is the means of that, sir? What you want to tell about this thing means you are putting some indexes. So I just want to tell you now how can you represent this thing. So first I am telling you, if you want to represent this thing in 1D array, or you can say in memory, how can we represent this thing? So I am making a array like this, 1D array. Okay. Now I will see how can I represent this thing 3D array in 1D array. Okay. So see this part. First see this part. Only this part. Just forget about this part now. Okay, so here you can see, sir, the means of this is written like 2. So I am saying I will divide this array into 2 parts. So one index will be 0, other index will be 1. So first I will divide this array into 2 parts. So I can say, sir, this is array 0, and second part you can say, sir, this is array 1. So I am putting some indexes 0 and 1, and I've divided into 2 parts. Okay, so this part is clear, sir. This part is clear. Now this part is clear. Now again the second part is saying, sir, when you divide it into 2 parts, every element, so I have already told you in the two-dimensional array, when I am taking this, so I am saying, sir, it has the 0, it has the 1, 2 indexes. So every time this 0 index has the 3 element, and again this a0, the dimension of a0 is 3, and same the a1 dimension will be 3. ये मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया भी था कि आपको मैंने इस तरीके से समझाया था कि if you have the 3 dimension means you can say this is 0, this is 1. Sir, this is 0, 1 and 2. So 3 element in column, 2 element in row. So this is A00, A1, A01, A12, this is A10, this is A11, this is A12. So this A0 have the 3 dimension means 3 elements are there. This A1 already has the 3 dimension. So you can say every time every indexes has the 3 dimension. Okay, so this index 0 index has the 3 dimension, 1 index also has the 3 dimension. So in this way you can say, sir, I can divide. So I am taking other color. Sir, I can further divide this array into 3 parts. Okay, 3 parts because sir, this is given this in this type. I can divide into 3 parts also. So I can divide into 3 parts this array, and I can take the name. The name is A00. You can say, sir, A00. I can take this name A01. I can take the name is A02. Similarly here I can divide this thing into 3 parts. This is A. I am taking the array name A now. So array or A, so this is the same thing. So don't confuse with the here is A, here is array. So you can, this is a similar thing. Okay, you can take again, this is A10 because you are dividing A1. So you will write A10, A11 and A12. A12. Okay, so I am removing this part. This is for understanding part. Okay, so the scenario is like this. Till 2D array, this is the thing. But now you can see, sir, I have already divided, you have already divided this part into more further 4 part. अब आपको क्या करना है, जो आपके पार्ट डिवाइड हो गए, these are the parts,
in particular you got this a00, a01, a02. This is the part, and I am saying again कि all these indexes 0, 0, 1, 2. Now I am saying about this indexes 0, 1 and 2. Further we can divide it these thing into 4 dimension, means we can divide into 4 part also. So we can divide this 1, 2, 3 and 4. Again we can divide this is 1, 2, 3 and 4. Again we can divide 1, 2, 3 and 4. Like this we can divide here also 1, 2, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4. So when we represent the three-dimensional array into the 1D, so you can understand, first we divide this part. So we have divided into two parts according to this. So two indexes are here. Okay, then when we get the two indexes, we divided these indexes into three indexes. So these three indexes are 0, 1 and 2. Again for the second, this is 0, 1 and 2. After that, every indexes I get, this is a00, a01, a02, I will divide these indexes into 4 parts. Okay, so I have divided into 4 parts. Every indexes I will divide into 4 parts. So the value of this first element should be, this is a0, 0 and 0. Okay, like this you can understand here a00 is common, for that you will divide this, only you will change the index. Okay, so these 4 element will be a000, a001, a002, a003. Like this you can find. Again for this a01 will be common. Again that first item will be, first element will be 01. So you can start the indexes 0, 1, 2 and 3. Okay, these things will be common 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. So all the element you can find now. You can understand how can you represent a 3D array in a particular 1D array. And after that, if I will ask some base address is given to you, if I will say to you that base address is given to you here, some base address is given to you, that is same base address is given to you 1000. Okay, and now I will ask you ki just give me the answer of 111. Okay, what should be the address of this? Or every element taking the w value, the size of every element is 2 byte. Then how can you give the answer for this question? Okay, so first tell me, you just understand how can we represent a 3D array to the 1D array, or we can understand how can we means relate this thing into memory. If you are saying this is the memory part, so how can you arrange a 3D array in a memory part? Is it okay? Or if you are not getting this, again I will try to explain you. Just tell me first, is it okay to you? Sir, it's Sir. getting little confusing after 3D arrays. Yes, sir. Okay, so again I am taking small example. Okay, so then you will understand this thing. Okay, so 2 then 2 then 2. इसको देखो ऐसे समझो, अब मैं थोड़ा अलग तरीके से देखो, हर एक बार इस तरीके से समझो कि सर मुझे ये दो पार्ट दिया गया है, अगर मुझे पहले पार्ट इस तरीके का 1D एरे है, और मुझे क्या कहा गया कि अगर 1D एरे में अगर नॉर्मल मुझसे कहा जाता कि 2 एलिमेंट्स हैं, अभी ये भूल जाओ, अगर आपको दिया जाता नॉर्मल A2, तो आप क्या करते, एक एलिमेंट को यहाँ पे रख देते, दिस इज A0, दिस इज A1, कि सर दो एलिमेंट हैं और दो एलिमेंट को मैं इस तरीके से, यहाँ कुछ भी वैल्यू हो सकती है A और B, दो एलिमेंट को मैंने इस तरीके से रख दिया, आप लोग नाम इस तरीके से दे रहे थे A0 A1. इज इट ओके? इज इट ओके और नॉट? यस सर. यस सर. ओके, यहाँ तक समझ आ गया? चलो अभी दूसरा चलो ये हटा देता हूँ, चलो यहाँ तक समझ आ गया आपको. अब मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, सर आपने क्या किया, A2 कर दिया. अब इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि सर मैंने दो पार्ट में पहले डिवाइड कर रखा है, उन दो पार्ट्स को आप ये समझ लो अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, उन दोनों पार्ट्स को जो भी आपके पास पार्ट्स हैं उनको अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो मैंने अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया सर, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, और जो दूसरा पार्ट था मेरे पास पहले से उसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो इसका नाम अब मैं क्या दूंगा, जैसे यहाँ पे नाम था, तो लेकिन अब देखो पहले नाम मैं दे चुका था, इस पूरे ब्लॉक का नाम मैं क्या दे चुका था, A0. ठीक है, इस पूरे ब्लॉक का नाम मैं पहले क्या दिया था, A0. नाउ अगेन
I can divide into two parts, so I can say this is 0, this is 1, this is 0, this is 1. बट ये कौन से नंबर पे आएगा सर? पहले मैंने नाम A0 दे रखा है तो मुझे A0 तो लिखना पड़ेगा, फिर मैं इसका जो भी नाम दूसरा पार्ट का जो नाम आया है वो नाम दूंगा, तो इसका नाम हो गया A00, दिस इज A0 तो मुझे देना पड़ेगा सर, इसका पूरे पहले ही मैं नाम दे चुका हूँ, ये फिर A1 आ गया। इस पूरे ब्लॉक को पहले मैंने नाम क्या दिया, A1 नाम दे रखा है तो A1 बोलूंगा सर, उसके बाद इसको 0 नाम दे दूंगा, इसको 0 नाम दे दूंगा, इसको 1 नाम से बुला रहा हूँ इस बार, तो इसका नाम चेंज हो गया। अब इन ब्लॉक्स के नाम इसके अकॉर्डिंग 2D एरे में अगर देखोगे तो इनके नाम ये हो गए। 1D एरे में इस पूरे ब्लॉक का नाम क्या था, A0, 2D एरे में इनके दो पार्ट हो गए तो उनका नाम क्या चेंज हो गया, A00, A01, A10 और A11। इज इट ओके टिल नाउ? यू आर विद मी? Yes, sir. ओके, एवरीथिंग इज राइट? यस और नो एवरीवन? Yes, प्लीज sir. यहाँ तक समझ आ गया? ओके, वेरी गुड। नाउ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद मैंने एक काम और किया कि सर अब आप क्या कर रहे हो सर, A2 तक की कहानी तो मुझे समझ आ गई, मैं एक 2 और लगा देता हूँ। अब क्या होगा, अब क्या कहने का मतलब है कि जितने पार्ट आपके पास मिल गए उनको फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। तो सर मैं क्या कह रहा हूँ कि आप इनको फिर से डिवाइड कर दो 2 पार्ट में। अब इन ब्लॉक्स के नाम क्या हो गए थे, इन ब्लॉक्स के नाम मैं वही रख देता हूँ। इन ब्लॉक्स के नाम क्या हो गए थे, A00, A01, A10 एंड A11, ये नाम हो गया था। एंड इनको फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका तो आपको, और फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड किए, इसको 2 पार्ट में, इसको 2 पार्ट में, इसको 2 पार्ट में, इसको 2 पार्ट में। अब सर इसका नाम क्या होगा, अगेन मैं कहता हूँ कि मैं फिर से इनको इंडेक्स प्रोवाइड कर देता हूँ। 2 पार्ट किया है तो 01, इसको भी 01, इसको भी 01 और इसको भी 01। तो सर इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सर, पहले से इस पूरे ब्लॉक का नाम क्या है, इतने बड़े ब्लॉक का नाम क्या था, A00। तो इसको, इस ब्लॉक का नाम हो जाएगा A00 और ये वाला नाम 0। तो इस ब्लॉक का नाम क्या हो गया, A00, बिकॉज इसको पहले ही मैंने डिफाइन कर रखा था, इस पूरे ब्लॉक को A00 से। इसमें 2 इंडेक्सेस 2 पार्ट में मैंने और डिवाइड कर दिया तो मैं 0 बोल दूंगा। इसको मैं क्या बोलूंगा सर, इसको बोल दूंगा, अभी मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, A001। ठीक है, इसको क्या बोलूंगा सर, इस ब्लॉक का नाम था A01, तो पहले A01 तो मुझे लिखना पड़ेगा, और इसमें क्या इंडेक्स प्रोवाइड कर दिया, 0 कर दिया, तो इसका नाम हो जाएगा A01, A10 सॉरी। इसका नाम क्या होगा सर, A01 तो पहले से इस ब्लॉक का नाम था और उसमें 1 इंडेक्स मैंने प्रोवाइड कर दी, तो इसका नाम ये हो जाएगा। अगेन इसका नाम सर A10 पहले से था और 0 मैंने प्रोवाइड कर दिया। इसका नाम सर 10 पहले से था, 1 प्रोवाइड कर दिया। इसका नाम क्या होगा, 1 1 1 एंड सर 0 मैं प्रोवाइड कर दूंगा, इसका A11। तो 3D रिप्रेजेंटेशन हो गया। नाउ यू कैन सी हियर कि मैंने एक 3D एरे लिया, 3D एरे को एक 1D एरे में रिप्रेजेंट कर दिया, 0 0 0। नाउ अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पे कि बेस एड्रेस इसका 1000 है, और मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि इसका आंसर बताओ कि A10 का A01 का एड्रेस क्या होगा, एड्रेस ऑफ A01। अगर आप इस तरीके से बना पाओगे और मैं इसको बोल दूं कि 1000 था और W इसका 2 बाइट्स है, ठीक है, तो यू कैन आंसर, बिकॉज यहाँ पे आपका वाइट क्या होगा, यहाँ पे एड्रेस क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे एड्रेस आप ही बताओगे 1002 हो जाएगा सर, यहाँ का एड्रेस हो जाएगा 1004, यहाँ का एड्रेस हो जाएगा सर 1006, 2 ऐड करता जा रहा हूँ, यहाँ का एड्रेस हो जाएगा 1008 सर, यहाँ का एड्रेस हो जाएगा 1010। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, 1010। तो आई कैन कैलकुलेट द आंसर ऑफ, आई कैन फाइंड द एड्रेस ऑफ दिस मेमोरी, 3D मेमोरी की, इसकी ये वाला जो एलिमेंट है वो किस एड्रेस पे रखा हुआ है मेमोरी में, तो यू कैन फाइंड दैट पार्ट। सो नाउ थिंग इज क्लियर कि 3D एरे में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी मैं ट्रिक सिखा दूंगा आपको कि किसी भी एड्रेस, कोई भी एड्रेस आपको दे दिया जाए तो हाउ कैन यू फाइंड दैट पार्ट, बट फंडामेंटली यू कैन अंडरस्टैंड कि मेमोरी में इस तरीके से ये अरेंज हो रहे होंगे एलिमेंट कि पहले आपका 1D में डिवाइड हुआ, उसके बाद 2D में कैसे डिवाइड हुआ, आफ्टर दैट 3D में कैसे डिवाइड हुआ। इज इट ओके? Now this part Yes, is sir. Yes, sir. so now Sir, you call this one, the lower one as 1D array and the whole thing as 3D array. yeah, whole thing is 3D array. Okay, not And 3D array. it's I'm represented saying in no, 1D array. no. This is 1D. This is 1D. What I am doing, the representation. This is only the representation means what I am doing. Normally, 2D array represented by matrix. Otherwise,
आपकी 3D एरे में क्या लेयर्स आ जाएगा कि आपका लेयर्स स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स 3D एरे अगर आप बनाना स्टार्ट करोगे, 1 लेयर आफ्टर दैट 2 लेयर, इस तरीके से लेयर्स Yes, आ I जाएंगे। understood, बट sir. या देन आई कैन रिप्रेजेंट दैट पार्ट इनटू द 1D एरे, बिकॉज मेमोरी में आपका कोई लेयर वगैरह नहीं शो होता, वो तो मेमोरी की लोकेशन से उन पे आपके पर्टिकुलर एलिमेंट्स रखे होते हैं। वो अंडरस्टैंडिंग हमारी है कि दिस इज द 3D एरे, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ओनली। ओके, सो मैंने 1D एरे में रिप्रेजेंट कर दिया, तो मैं एड्रेस को फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि इन द एरे यू हैव द कंटिन्यूस मीन्स कंटिन्यूस एड्रेस लोकेशंस फॉर एलिमेंट्स। इज इट ओके? सो आई थिंक Yes, 3D sir. एरे, अगर इसी तरीके से मैं 4D एरे बोल दूं, अब तो मैं एन डायमेंशनल बोल सकता हूँ। मैं आपसे बोलता हूँ कि सर कि नाउ यू कैन रिप्रेजेंट दिस पार्ट इनटू 2D एरे। अगर मैं इस तरीके से 4 डायमेंशनल ले रहा हूँ, तो अगेन यू व्हाट यू विल डू, इसका नाम A00 हो गया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दोगे। एवरी एलिमेंट यू विल डिवाइड इनटू 2 पार्ट अगेन, एंड यू विल पुट द नेम, कि आप नेम डिवाइड कर सकते हो, उसका नेम बता सकते हो कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दिस एलिमेंट। इज इट ओके? इसी को 5 डायमेंशन कर दूं, 6 डायमेंशन कर दूं, एन डायमेंशन कर दूं, ठीक है? तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग ना। दिस इज जनरलाइज मीन्स, अगर कोई भी अगर आपको इस तरीके से डायमेंशन दे दी जाएगी, देन यू कैन अंडरस्टैंड हाउ कैन यू अरेंज दिस टाइप ऑफ एलिमेंट इन ए पर्टिकुलर 1D एरे। इज इट ओके? सो दिस इज नाउ जनरलाइज इन योर माइंड कि कैसे करना है। प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. So everyone, please reply everyone. Otherwise, only 3 students. Okay, 5 students are there. So Devyani, Yashra, Sumit, Tanish, Gokul, everyone, please reply. So Yes, it is sir. okay. Okay, Yes, sir. Yashra. Okay, Sir, everyone. Yeah, ask me. yes, sir, I got stuck in for a moment, sir. Okay, okay. So you want to ask some question, or means your screen is not visible? What is the problem? Sir, like I got cut off and the screen is like it's not there. Not visible. I think you No, just sir. need to rejoin. So go and again rejoin. Try to that part, and then we will see. ओके, अभी 4-5 क्लास के बाद आप लोगों का नेट भी ऑफ कम हो जाता होगा, आई थिंक। मेरा तो होता है, बिकॉज मैं नॉर्मल यूज़ कर रहा हूँ डेटा पैक और वॉट एवर। वी आर रीचिंग इंस्टीट्यूट ऑन द 1st September, देन वी विल टेक द क्लासेस फ्रॉम इंस्टीट्यूट, सो देयर विल बी नो प्रॉब्लम विद द नेट और अदर थिंग। ओके, Okay, सो sir. अभी तक आप लोग कॉलेज तो नहीं गए हो ना? यू आर टेकिंग द क्लासेस फ्रॉम होम ना? Yes, sir. ओके, सो ओके, सो होप कि आप भी कॉलेज आओ, वी विल मीट एंड वी विल टी मीन्स स्टडी टुगेदर। ओके, सो दिस इज द थिंग फॉर 3D। नाउ आई जस्ट want to give you a question like, so I am giving you question, so just check. Okay, so I am giving a question like this. You have one array, sorry, question, this you have one array like 2, 3 and 4. Okay, this is a 3-dimensional array. Okay, after that I am saying just calculate the address of 1 comma 1 comma 1. Okay, Sir, address and of, indexing is okay, I am giving you this is, or you I can write like this. Just find the address of 1 comma 1 comma 1. Okay, the array is given to you and the base address is 1000, and same the size of the element is 2 byte. Okay, how can you calculate this thing? So first you will try, otherwise I will tell you. So you just tell me first question, I just try to tell you, or you can attempt first. sir 1 minute. Sir. Okay, so means I am first I will tell you, then you can attempt for that. Okay, no problem. Okay, so how can do this? So for this, so already we have generalized the thing. First you will see this part a1. This time I am taking one part. So first you will see how many so now you will say, if I will say this is first dimension, this is first dimension, this is second dimension, and this is third dimension. When I will call a1, so I am talking about the first dimension, so leave the first dimension, so now how many dimensions are there? Please tell me. 2 left. Two dimensions are there, dimension 2 and dimension 3.
So what you will do, you can say here for one, how many matrix, or you can say how many elements in the matrix present, how many elements present in matrix, okay, or in matrix, and before 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 the given dimension, means one dimension is given to you before the given dimension, or you can understand like this, forget what I am written. So you can understand like this, sir, 3 and 4, this is the matrix. So total element before, how many matrices are there, sir? Already 12 elements, 3 multiply 4, or you can understand this thing like this also, sir. First I will divide it into two part, means this is, you will divide into two part, this is 0 or 1. So I can say, sir, this is a0 and this is a1. So two matrix will be there, sir, of size 3 cross 4 or 3 cross 4. Okay, two sorry, or you can say like, if you are understanding this part, okay, remove this part. You can understand like this, you will multiply both of the dimension, okay, you will multiply both of the dimension, okay, this will be okay for you. You will multiply again both of the dimension, okay. Now I will reach at the a I am taking a11, okay. So one thing more, how many elements or how many matrices are present, how many indexes are before the a1, how many index are there? 0 will be 1, there, 0. 0 will be there because I am starting 0. So 0 will be there, then I will multiply with 1 also, because one array is, one element is also there. So total 12 elements present before the this a1, okay. And when I reach this a11, then you can see I will leave this part, I am coming on this part, okay. So now I am here, on this value 2, okay, second dimension. So four elements are there, okay, four elements are there. And how many elements present before the a1, how many elements before the a1? So you can check this part. So before a1 there will be 0 and, so only one, okay, 0 is only one element, so you will multiply this one, okay. So four elements are also here, okay. And for the last part you can see this is a11, and 1. So what you can see, there is no element, though no dimension here, so you will not multiply for any dimension, okay. You just calculate how many elements before the 1. So before the 1 only one element is there, okay, 0, only one element is there, 0. So you will write that is only one element should be present before this, okay. So only one element present before this, so you will add these elements. So total elements present here, that is 12 plus 4 plus 1, that is the 17, okay. 17 element will be there before the a11, okay. This is the scenario. So again I am telling you what I have did, just wait. So I am taking the example of I am taking the example of this a2, 3 and 4, and I just want to calculate the address of a111. So I have taken a1 means I am taking only the one dimension. So I am watching this part. First I will calculate how many elements before this one. So only one element are there, so one element is there. And how many dimensions are remaining for this? So you will multiply this dimension, so you will multiply with this one element to this 3 and 4. So total 12 elements are there before this a1 when you are taking the a1, okay. When I will take the a11 second dimension, now I will go for the second dimension,
Okay, so I am talking about this second dimension till now here. Okay, so A11 means the remaining dimension is 4, so you will take this 4. And how many elements are present before the 1? Only one element are there, so you will multiply, that is 0 index. So you will multiply this one, so 4 elements are there. Okay, after that you are reaching 111. Okay, so you will check there, you are talking about the all three dimension you are taking, so there is no other dimension to check. So you can say, sir, this one I will check only the dimension, the element before this one. So only one element is there, that is 0, means A110 element before the A111. So you can say, sir, only one element is there, so I can write only one element is there. So I will add these elements. Okay, all the elements. So 12 plus 14 plus 1, that is the 17. Total 7 elements are there. And after that, what is the size taking? 2 bytes it is taking. So you will multiply, that is the 14, and you will add the base address 1000 plus 34, that is total address will be 1034. The address of A111 will be 1034. This is the answer. So you just understand, when I am taking that dimension, I am multiplying this and I am seeing how many elements are present before the 2. When I reach here, I will see what dimensions are remaining, and I will see how many elements before this one, or what is index given to you here. Okay, again I will reach here, I just see how many elements before this given particular index, and I will add these indexes, then I will find the total number of elements. This is the way to find out the total number of elements. After that, you will multiply of the size of, means W, you will multiply and you will add the base addresses, then you will get the answer. Is it okay? So you got this. I will give you one question so you can understand the thing, means thoroughly. So I am giving a question to you for this, that I am making the theoretical question. So 3 comma 3. Okay, so comma 3, or you can say this is like this, and this is -5 to 5. Okay, and last is again -5 to 5. This is -5. So this is a 3-dimension question. W is given to you again 2 byte, and the base address I can take 1000 again. Okay, and you have to find out the address of A0, 0, 0. Just try to find out the answer of this question. So try first, then just tell me. So first you just count how many elements before this A00. Total elements count kar lo. You can say the total elements. Find the total elements. So try to find out this. So I have given the 1 and 2 minutes time for this, so you can attempt this part and give me the answer. थ्री को थोड़ा विजुअलाइज करना थोड़ा टफ है, बट इट इज ओके. एक बार ट्रिक सीख जाओगे तो n डायमेंशन यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन ऑफ n डायमेंशन आल्सो. Sir, we have to find total elements in every, for example, from the range -3 to 3 or -5 to 5. Yeah, so first you can find this thing. So how many elements are there? So I think sir, you seven. can find Sir, 7. Here 11, here 11. 11. That is okay. Okay. After that, what is given to you? A000. Okay, so first you will find A0. For A0, okay, what you will find? So dimension is given to you like this: 7, 11, and 11. Okay, so I am talking about this. First I am taking first dimension, so other dimension are remaining, that is 11 and 11. So you will multiply these two dimensions. Okay, the question is like that. Now 7 is given to you, 11 is given to you, and total 11 is given to you. Okay,
You can write the 7, 11, 11 means total elements are 7, 11 and 11. Okay, the question is like that. Okay, so when you are calculating the A0, so how many indexes before the A0? So for this you can say, sir, you can start from -3 and you will go till the -1. Okay, this will be the indexes before the A0. It is okay for this? You are with me? Yes, sir. Okay, so total number of element for this, total number of elements means last matlab -1, sir, -3 and +1. So total elements is 3. Okay, before the A0 total means indexes are 3. So I will multiply with 3, sir. I will multiply, this is the number of indexes before the A0 and this is the dimension, sir. This is the dimension विच आर रिमेनिंग. ये मैट्रिक्स का डायमेंशन है, इतने एलिमेंट और होंगे और इतने तो मेरे हैं जो A0 से पहले मिलने वाले हैं. तो ये भी मल्टीप्लाई करूंगा इन डायमेंशंस का दोनों, और आई विल मल्टीप्लाई विद 3 बिकॉज दीज इंडेक्सेस आर बिफोर द A0. ओके, फर्स्ट पार्ट इज क्लियर टू यू एवरीवन? प्लीज टेल मी. Yes, sir. Okay, we are going for the second. Now we Yes, will sir. calculate, yeah, we will calculate for the A00. Now we are reaching this part. At this part I am reaching, or we can say we are reaching at this part, second part. So dimension आपके पास इसके बाद क्या बचा हुआ है? 11. So you can write the directly 11 here कि I will multiply that number with what number we will get. So यहाँ मुझे बताओ कि जीरो से पहले कितने एलिमेंट आए होंगे फॉर द सेकंड टाइम? जीरो से पहले how many indexes are there for second part? -5 to 5. Okay, so I can write, sir, -5 to -1. This is the last value and this is the first value. So I can write, sir, -1 -5 plus 1 means 5 elements are there. 5 elements are there before the 0. So I will multiply with 5. So I will get the value, something value that is 55. Here I will get some value 121 multiply 3. So 363 I will get. Okay, so everything is clear till now for the second part. For the second Yes, sir. part, when I will reach here, I will take this dimension to multiply and I will find how many indexes before the 0, and I will multiply that part. That is okay, I think. So third part आपको क्या है? Third part तो easy है. Third part में करना क्या है? Only you will find there is no dimension. When I will reach here, there is no dimension after this. So you will find whatever. You will just find how many elements before the A0, because third thing is A0 again. This 0, 0 and 0. We are talking about this. So before 0 again, you know, this is the same dimension given to you, -5 to 5. So you can know that is the 5 elements are present. 5 elements will be present before the A00. So 5 elements. Okay. So you will add all the elements. So total elements will be what is given to you, 36355, 363 plus 55 plus 5, whatever the answer. So you can calculate that answer. I think 60 and 423. Okay, so this is your answer again. I am not right. 423 or whatever. 423. Is it okay or wrong answer? Yes, sir. Or 363 plus 60. Okay, that is okay. Very good. 363. Okay. Now what I can do? Just I will multiply with 2 and add the 100. So just for the address of A00, you can do base address is 1000 plus 2 multiply 3423. You will add this part. You will get the answer. This is the size of every byte, every element, and this is the total number of elements, and you will add the base address. You will get the answer. So this will be your answer. Whatever the answer, the procedure is this for the 3-dimensional. So is it okay to you? How can you find? You can find the address for any 3-dimensional array. Is it okay? Yes or no? Yes, sir. Okay. अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं इसी में अगर complicated, sir. Yeah, no, so now you can, I am taking one more example, so that will be okay for you. Now you will get
Yeah, this is when the dimension will be increases, then you can understand that the complexity will be increases, but not complex. So if you will think, you can generalize this thing. So I am taking one more example. I will take 2 minutes so you can understand the thing what I am doing. So I am taking this example. This is 3 minus 10 to 10 chalo, and I am taking minus 4 to 4. So now the dimension, you can see the dimension is 4, or you can generalize. I am taking one more dimension, and now I am asking to you, just calculate the address of 1 2 1 2. Okay, this is the question. Address of 1 2, again this is given, w is 2 byte or whatever, or base address is 100 1000. Okay, that is okay. So first we have to calculate the total number of element. So इसके लिए easy तरीका देखो, first आपको क्या करना है, first a1, I will take this a1. So first you calculate how many numbers in this array. So total number in this array, you can see this part have the 11. This is 11. It will take the 7. Is it okay? I am right? Yes. I am right or wrong? Yes, So sir. how many here? That is a 21, I think. 21 will be here, and here Yes, will be 4. Here will be 9. Okay. So 9 9. elements are there. Okay. When I am talking about, so you can write like this is first. When I am talking about this a1, so you can see, first of all we will multiply these dimensions. So you can multiply 7, आगे की जितनी भी dimension उनका multiply पहले कर दो, 21 and 9 total elements. Now the last part is that कि इसमें कितने element a1 से पहले हैं, कितने एलिमेंट्स a1 से पहले हैं, उसको कैलकुलेट करने के लिए जस्ट यू हैव नो 1 से पहले कहाँ तक जाएगा, -1 5 से चलेगा और 0 तक जाएगा. तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए, 0 माइनस 5 प्लस 1 मीन्स 6 एलिमेंट. 6 एलिमेंट्स आर देयर, यू विल मल्टीप्लाई. तो जस्ट a1 के लिए यू विल मल्टीप्लाई. सो a1 डायमेंशन के लिए इतने एलिमेंट्स आ चुके होंगे. ओके, नाउ आई विल गो फॉर द a12 ट्राई टू अंडरस्टैंड. यही आपको हर एक जगह लगाना है. अब a12 मैं दूसरे पार्ट पे आ गया, मैं यहाँ पे आके खड़ा हो गया हूँ. ठीक है, यहाँ पे खड़ा हूँ. तो डायमेंशन कितनी बची है आपके पास, 2 डायमेंशन बची है. यू विल मल्टीप्लाई दिस डायमेंशन 21 इंटू 9. आफ्टर दैट जस्ट सी कि आपको एलिमेंट क्या दिया है, a2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है. मीन्स 2 से पहले कितने आपके इंडेक्सेस आए हुए, -3 से लेके आपका 1 तक गया होगा. तो 1 -3 प्लस 1 मीन्स टोटल एलिमेंट आपके पास कितने आ गए, 5. तो यू विल मल्टीप्लाई ओनली द 5 वैल्यू हियर. ओके, नाउ यू विल रीच एट द वैल्यू ऑफ a2. यहाँ से आगे आ गए 1 पे, फिर आ गए a2 1, थर्ड पे आ गए, आप यहाँ पे आके खड़े हो गए हो. तो इसके बाद डायमेंशन कितना बचा हुआ, दैट इज ओनली 9. यू विल मल्टीप्लाई. नाउ आपको चेक क्या करना है, इंडेक्सेस इससे पहले 1 से पहले कितने आए हुए हैं, तो -10 से 0 तक आया होगा. ओके, so 0 minus -10 plus 1, so 11 elements will be there. So you will multiply with 11 here. Okay, ये आपका लास्ट जो नंबर लिख रहा हूँ, ये वाले वो नंबर हैं जो इससे पहले आ चुके होंगे. सो टोटल एलिमेंट आई कैन काउंट. सो दिस इज फॉर फर्स्ट, दिस इज फॉर सेकंड, दिस इज फॉर थर्ड, दिस इज फॉर सेकंड, दिस इज फॉर थर्ड, एंड फोर्थ आपका क्या है. ना आई एम रीचिंग हियर. इसके बाद कोई डायमेंशन है, अब मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, इसके बाद कोई डायमेंशन नहीं है. ओके, 1 2 1 एंड लास्ट आई एम आस्किंग यू 2. So I will multiply nothing. Okay, I will just count how many indexes before this 2. लास्ट वैल्यू 2 है, तो 2 से पहले कितना इंडेक्सेस आया होगा फोर्थ के लिए, 2 से पहले -4 से स्टार्ट हुआ और 1 तक गया होगा. देन आई कैन राइट दिस इज 1 -4 प्लस 1. ओके, सो दिस इज 6. सो आई कैन राइट हियर 6 एलिमेंट, टोटल 6 एलिमेंट बिफोर दिस. सो टोटल एलिमेंट आई विल मल्टीप्लाई दिस वैल्यूज, एंड लास्ट आप क्या करोगे, इन सबको ऐड कर दोगे. सो ऐड ऑल दिस वैल्यू, देन यू विल गेट द एलिमेंट, दीज एलिमेंट्स before this. Then you will multiply 2 bytes and you will add this value to the 1000. You will get the address. So this is easy way. So now you can understand कि मैं क्या करने जा रहा हूँ. कितना भी डायमेंशन आपको यहाँ पे एक और डायमेंशन लगा देता, 2 और डायमेंशन लगा देता, एन डायमेंशनल कर देता, एनी वैल्यू आई विल प्रोवाइड, यू कैन फाइंड द एड्रेस, यू कैन एबल टू फाइंड द एड्रेस. इज इट ओके नाउ? अब आपको समझ आया थोड़ा सा ट्रिक देख के? Yes, sir.
नाउ इट इज क्लियर। मैं कुछ भी डायमेंशन आपको यहाँ पे 5 दे दूं, 6 दे दूं, 8 दे दूं, 10 दे दूं, इसको मैं बढ़ाता जाऊं सीरीज को, यू कैन नाउ अंडरस्टैंड कि सर अब तो मैं फाइंड आउट कर लूंगा, मुझे केवल डायमेंशन का मल्टीप्लाई करना है और मुझे ये देखना है कि इससे पहले कितने इंडेक्सेस आए हुए हैं और उन एलिमेंट्स को निकाल के मल्टीप्लाई कर देना है। इज इट ओके? दिस इज ओके फॉर यू? कि अब आप इस तरीके कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, कोई भी डायमेंशन में दे दूं आपको, इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए। इज इट ओके? यस सर। Yes, sir. तो मैं एक क्वेश्चन होमवर्क दे दूं, उसके अटेम्प्ट करना, और फिर 4 डायमेंशन का क्वेश्चन दे दूं, सेम इस तरीके का कोई Fine, क्वेश्चन दे sir. दूं आपको? ओके चलो, या फिर रहने दूं, अगली क्लास में इसको रिवाइज कर लेना। चलो रहने देता हूं, तो यू कैन रिवाइज दैट पार्ट, इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा कर लेना। ओके, सो रिवाइज दीज क्वेश्चंस, वी विल अटेम्प्ट। सो इन द नेक्स्ट क्लास, आई थिंक बुधवार को है, तो आई विल ट्राई टू फिनिश। इसमें थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, वो मैं समझा दूंगा। आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट सम अदर, एरे ही पढ़ाऊंगा। अब एरे में आपको अब बताऊंगा कि एरे में इंसर्शन कैसे करते हैं, डिलीशन कैसे करते हैं किसी वैल्यू का, और बहुत सारी बातें वी विल अबाउट टीच। सो इट विल टेक आई थिंक 2 or 3 मोर क्लासेस अबाउट द एरे। वहाँ पे आपका प्रोग्रामिंग का फ्लेवर भी आएगा थोड़ा सा, तो आई विल टीच यू दैट पार्ट ओके इन द नेक्स्ट क्लासेस। सो टिल नाउ टेक केयर, और आई थिंक वी विल मीट ऑन द वेंसडे नाउ, वेंसडे और थर्सडे डायरेक्टली। सो बीच में आपकी छुट्टी है मंडे को, ओके, ड्यू टू जन्माष्टमी। सो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। So we will meet on the Thursday for the next time. So take care till now, till then. So थोड़ा फास्ट तो नहीं हुआ है? Yes or no? Please reply. No, Hello. sir. It was nice. Okay. So easy concept था. Please try to means grasp this thing. अगर एक बार खुद से क्वेश्चन कर लोगे तो you can understand. Same question खुद से attempt करना, तो you can find out that part.